Hello students, how are you? Assalamu alaikum. Welcome to your new session, your new class, class 2. I am your teacher Hafsa Jameel, here again with your subject computer. Today I am going to teach you lesson number 6 and the name of the lesson is Computer Room Manners. We have read many things about computer parts, computer devices, where computer are being used. अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मैनर्स, कंप्यूटर रूम मैनर्स, कंप्यूटर लैब मैनर्स, जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर्स को प्लेस करते हैं, विच मैनर्स शुड बी फॉलोड एंड विच शुड नॉट बी फॉलोड. तो ये वाले ईच एंड एवरीथिंग वी विल रीड और लर्न फ्रॉम दिस यूनिट. First of all, I will read these points from whiteboard which I have pasted for you, and then we will go towards the reading. We will read the unit and then we will discuss some comprehension question answers on the book and some activities or some exercise of that particular subject. So let's start our reading from the whiteboard. I have pasted do's and don'ts, those rules which should be done in the lab or computer room and those which should not be done in the computer lab. The first one, take off your shoes before entering the computer room. जब भी कंप्यूटर रूम में एंटर करें, you should have to take off your shoes because क्या है, from your shoes some dust particles came from your shoes and they can enter in the lab और वो virus create कर सकते हैं in the computer. So it's better to take off your shoes before entering your room. Second one is press the keys on the keyboard gently. You have seen that we have buttons on the keyboard which we press and write something on the computer screen. Those buttons are called keys. And those keys should be pressed gently, not hardly or harshly. These two rules should be followed. We have many other rules and we will discuss those rules later on in the reading. I have selected a few and then we will discuss the other one from the reading. Now I am going to discuss don'ts. Don'ts mean those rules which should not be done in the computer room. The first one, do not push or jerk the computer table. Jerk mean किसी चीज़ को धक्का देना, move करना, harshly धक्का देना किसी चीज़ को. So you don't have to push the computer table. जिस टेबल पे आपका कंप्यूटर प्लेस है, you should not have to jerk it, move it harshly. इससे क्या होगा? It can drop down. आपका कंप्यूटर गिर सकता है. It can break down. तो it is better not to jerk or move the table. Second one is do not keep the eatables near the computer. खाने वाली चीज़ें, eatables, खाने वाली चीज़ें कभी भी आपने कंप्यूटर टेबल के पास या कंप्यूटर सिस्टम के पास नहीं प्लेस करनी. It is better not to place your eatables close to the computer system. So these are the rules, a few rules which I have discussed. Some important rules we will discuss through reading. Now let's start our reading. Okay students, now take out your book, open your page number 35, unit number 6, Computer Room Manners. Now start reading. Children, a computer is a useful machine. It needs special care. So you should follow these rules. Take off your shoes before entering the computer room. This tick mark shows that these rules should be done in the computer room. And where we have that cross, that means that these should not be done in the computer room. Now we will read the next one. Always ask your teacher before touching the computer system. अपनी टीचर से हमेशा परमिशन लेके आपने कंप्यूटर सिस्टम को टच करना है. नेक्स्ट वन, डू नॉट पुश और जर्क द कंप्यूटर टेबल. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑन द बोर्ड कि आपने अपने कंप्यूटर टेबल को जर्क नहीं करना, like this boy who is jerking the table
of the computer system. Now next one is which you should not be done in the computer room, that is, do not touch the cables or wires in the computer room. कंप्यूटर रूम में आपने वायर्स वगैरह डिफरेंट किस्म की केबल्स और कंप्यूटर सिस्टम की वायर्स को टच नहीं करना. इट कैन गिव्स यू अ इलेक्ट्रिक शॉक. नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द पेज नंबर 36. डू नॉट कीप एनीथिंग ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड के ऊपर आपने कुछ भी कोई भी बुक वगैरह प्लेस नहीं करनी. इट इज़ नॉट राइट वे to use your books or place your books on the keyboard. Do not put any pins or clips near the computer. कंप्यूटर सिस्टम के पास किसी भी टाइप की पिन्स एट्सेट्रा आपने नहीं प्लेस करनी. Do not insert pencil, eraser or anything in the CPU. CPU के अंदर आपने कोई भी पेंसिल या इरेजर को इंसर्ट अंदर नहीं डालना. इंसर्ट मीन्स किसी चीज़ को अंदर डालना. तो CPU के अंदर आपने इस तरह की पेंसिल शार्प थिंग्स वगैरह को इंसर्ट नहीं करना. दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. डू नॉट कीप द ईटेबल्स नियर द कंप्यूटर. कंप्यूटर के पास आपने खाने पीने की चीज़ें भी नहीं रखनी. प्रेस द कीज ऑन द कीबोर्ड जेंटली. कीबोर्ड के ऊपर बनी हुई कीज को आपने जेंटली प्रेस करना है. कवर द कंप्यूटर बिफोर लीविंग द कंप्यूटर रूम. हमेशा आपने कंप्यूटर को कवर करना है जब आप कंप्यूटर रूम को लीव करते हैं, छोड़ते हैं. कैन यू टेल सम मोर रूल्स टू फॉलो इन द कंप्यूटर रूम? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. अगर आपको कुछ और रूल्स के बारे में भी पता है तो यू कैन शेयर दोज रूल्स विद योर फ्रेंड्स एज वेल. सो दिस इज द ending of your reading of this specific unit. Now I will go towards the exercise. Here are some comprehension questions. Answer the following questions. Here are some questions. Write any two things that you should do in the computer room. Computer room में आपने आंसर में you have to write down two things. दो ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना है जो कि आप कंप्यूटर रूम में कर सकते हैं. So select those two things from that specific reading and write those two things over here, or you can write the answer in your previous notebooks which you have not been discarded yet. The next question is, write any three things that you should not do in the computer room. यहाँ पे आपने you have to write down थ्री थिंग्स, ऐसी थ्री थिंग्स लिखना है जो कि आपने कंप्यूटर रूम में नहीं करनी. यू कैन ऑल्सो फाइंड दोज थ्री थिंग्स विच शुड नॉट बी डन इन द कंप्यूटर रूम फ्रॉम द रीडिंग एंड यू कैन राइट देम डाउन हेयर इन दीज थ्री लाइन्स और यू कैन राइट देम इन योर नोटबुक्स. नाउ हेयर राइट ट्रू और फॉल्स. You have to write down true for the correct statement and false for the wrong statement. जब जो सेंटेंस आपका ठीक होगा उसको आपने ब्लैंक में ट्रू लिखना है और जो आपका रॉन्ग होगा उसके लिए आपने फॉल्स लिखना है. We should not keep anything on the keyboard. Is it correct? Is it true or false? So we should not keep anything on the keyboard. This is right. So we will write down true, T-R-U-E, true in this blank. We should press keys on the keyboard gently. True. We should cover the computer before leaving the computer room. True. We should insert pencils only in the CPU. Wrong. So we will write down false. We should touch cables in the computer room. Wrong. We will again write down false.
So that's it. This is your reading and your book work as well. Well students, I hope you have understand this unit properly. I hope this lecture will help you to understand or learn this specific unit 6. Now keep reading, keep learning at home. Write down the answers in the notebooks, those notebooks which you should not have been discarded yet. So write them down on your notebooks. Keep learning and keep yourself safe from that pandemic coronavirus. Meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.